बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. With the permission of chair, स्टेज पे तशरीफ फरमा सभी मेहमानान एजाज़ी, बिलखुसूस आज के चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज़ काचो साहब, हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी से वाबस्ता जितने भी यहाँ पे सहाफ़ी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली प्रेस क्लब लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के से भी ताल्लुक़ रखने वाले स्टाफ का आज नेशनल प्रेस डे के मौके पर आप सबका खैर मकदम है. जैसा कि आज आप सबके ज़हनशीन है कि 16 नवंबर का जो डे है वो नेशनल प्रेस डे के तौर पे मनाया जाता है. इसी के साथ प्रोग्राम को मज़ीद तवील ना देते हुए मैं गुजारिश करूँगा मंसूर पीर साहब से, एडिटर DIPR, कि वो करंट मीडिया ट्रेंड्स पे अपना एक प्रेजेंटेशन है जो नेशनल मीडिया डिस्कोर्स में जो करंट मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पे अपना प्रेजेंटेशन पेश करें. As we know that media, the fourth pillar of democracy, it has gone as several changes from the days of the printing press in India, from the days of Hickey Gazette to the modern social media and the websites. So a lot of things have improved, and a lot of trends which we follow, so which have become part and parcel of the media. So since the COVID-19 pandemic started, the journalists or the media persons, they had to work from the home, and they were encouraged to use more and more technology, and in order to cater to the needs of the audience. Director, Department of Information and Public Relations, Union Territory of Ladakh, executive bodies, members of Press Club of Ladakh, staff members, DIPR, Kargil Ladakh, and Janab Haji Hussain Sahab, ex-AD Tourism, and Nasir Kafi Sahab, educationist and renowned poet of Ladakh region. A very good morning, and in our holy verse, Assalamu alaikum to you all. Sir, first of all, I would like to thank Shri Imtiaz Kacho sir, the worthy Joint Director, Department of Information, Union Territory of Ladakh, for organizing such a wonderful program, especially for the media fraternity of Kargil district on National Press Day. So before going ahead, I want to throw some lights on National Press Day, sir. Earlier, Mr. Fazli also put some lights on National Day. I also want to put some lights on today's event. Sir, as we all know that an independent and free press is one of the four pillars of a strong democracy. To highlight the importance of free and independent press in India, National Press Day is celebrated on 16th of November. Every year, Press Day is celebrated to also honor his contribution to making India a democracy. While the media acts as one of the pillars of democratic nation, the journalists working in various media houses like print and broadcast, act as the mirror whose report and stories reflect various aspects of society, as they are and with complete truth. The 16th of November portrays press freedom, duties and responsibilities towards the citizen. To celebrate National Press Day, the Press Council of India arranges various seminars and workshops to raise multiple issues faced by the Indian press, as well as to try educate the citizen on various matters further. Seminars and workshops are organized on topics such as right to information, RTI Act, the role and approach of the media while facing various sorts of crises, the duty of the Indian press to promote the nation of their fundamental duties, to make the citizen more aware, and finally relaying proper measures to the citizen in the time of crisis.
Apart from tackling the issues mentioned above, those workshops and seminars also aim to educate the people about the significance of free and just media in a democratic nation for a day or two. Additionally, the day is also celebrated to ensure the media has clear vision of its purpose and responsibilities. So, sir, I want to put some points related to challenge faced by Indian media, especially Ladakhi media, or you may say Kargil media. The Indian media has to face many challenges, and in recent years, these challenges have taken a massive toll on the proper regulation of news issues like the lack of transparency, getting bribed by the rich, major political influence, death threat to the media workers, and direct influence from major political parties are some challenges faced by the Indian media. These challenges question the very reason that the press exists and thus is a massive threat to the democratic structure of the country. So before concluding my speech, sir, I want to put some lights related to Press Club of Ladakh Kargil and some issues. As we all know, sir, today is very hectic for all of us. After that, we have to attend a corruption protest rally in market, sir, and few programs at other schools, and some of my personal engagements today. So that's why I'm concluding my speech, sir. So lastly, I must say, इससे पहले भी एक मीटिंग हुआ था सर वर्दी डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर इंचार्ज काचो की क़यादत में प्रेस काउंसिल कॉन्फ्रेंस हॉल में सर, जिसमें बहुत मुद्दों पे डिस्कस की थी सर। हमने सबसे पहले एग्रेडेशन को लेके सर इस पे भी बहस हुई थी सर, आपने एश्योरेंस भी हमें दी थी, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ था सर हमारा लैंड आइडेंटिफिकेशन को लेकर सर अशद ज़रूरत है सर उस पर काम करने की। वो एक हमारे लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन बन सकता है सर अगर आप इस पर अच्छी तरह फोकस करें तो सर। अभी हम जो प्रेजेंट जो प्रेस क्लब ऑफिस है सर, रिनोवेशन के बाद अभी ऑफिशियली हैंडवर्क हमें नहीं की गई है सर। हम चाहते हैं कि सर उसे एक दो दिन में प्रेस क्लब जो एग्जिस्टिंग प्रेस क्लब है सर उसे हम ऑफिशियली हम उसे रन करना चाहते हैं सर। और साथ ही साथ सर मीडिया एग्रेडेशन को लेके कल एक नया नोटिस भी जारी की गई सर। उसके अलावा हमारे जो ऑलरेडी एग्रेडेटेड जर्नलिस्ट है सर उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड है सर उन्हें रिन्यूअल की ज़रूरत है सर। उसके अलावा मैंने पद्मामा मैम को भी जो न्यू एग्रेडेशन के लिए जो नॉन एग्रेडेटेड जर्नलिस्ट है सर उनके भी मैंने लिस्ट ऑलरेडी दे दी है सर। साथ ही साथ बार बार शिकायत यही आ रही है सर लोकल जर्नलिस्ट से कि जो इवेंट जो दूर दराज इलाकों में होते सर, जैसे हमारे द्रास है सर, चित्तन है, या उसके अलावा संस्कार और पानी है, उस वक्त कई बार हमने रिक्वेस्ट की सर, जैसे एलजी साहब से भी की थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीसी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट की थी सर। ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही है सर। मिनिमम सैलरी पे, बहुत ही कम सैलरी पे जितने भी जर्नलिस्ट है सर काम कर रहे हैं, इनकी इतनी ये नहीं है सर कि अपना गाड़ी लेके दूर दराज इलाकों में जाए, और इतना बियर है लोग पेट्रोल वगैरह कर नहीं सकते सर। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप आज के इस डे पे नोट किया जाए सर। और साथ ही साथ कुछ एक्सपोजर टूर्स भी इस साल हमें देखने को मिले सर। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आफ्टर एब्रोगेशन लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल द यंग एनर्जेटिक श्री इम्तियाज काचू साहब, आपकी क़यादत में मैडम पद्मा आमूस से कमिश्नर सेक्रेटरी, काफ़ी हमें मीडिया को काफ़ी, अगर एग्रेडेशन की बात करें या काफ़ी इम्पैनलमेंट की बात करें या साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट, स्पेशली अगर हम हमारे जो प्रिंट मीडिया है सर, काफ़ी एप्लीकेशन के बाद हमें काफ़ी आउटपुट हमें देखने को मिल रही है सर काफ़ी। और साथ ही साथ एक्सपोजर टूर्स भी एक दो इस साल रखे हैं सर। उसमें कुछ ही दिनों में पुणे के लिए जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के हमारे लोग हैं सर वो जा रहे हैं सर। उसके अलावा भी और एप्लीकेशन के बाद यानी कि पहला हमें ऐसा मौका मिल रहा है सर जिसमें हमें बॉम्बे जैसे या पुणे के लिए टूर के लिए आप लोगों की उसमें हमें जाने का मौका मिल रहा है सर। और साथ ही साथ यही रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी लोकल मीडिया जर्नलिस्ट है सर, लोकल जर्नलिस्ट है, कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स, मीडिया इंटरेक्शंस, क्योंकि पहले तो मैंने कभी होते नहीं देखे सर। दिस इज मेरा चौथा साल चल रहा है सर एज ए प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख। ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एक्सपोजर टूर्स इससे पहले हमने कभी देखा सर। ऐसे
मीडिया के साथ इस तरह की इंटरेक्शन, इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें फर्स्ट टाइम हमें मिल रहे सर, और साथ ही साथ ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें भी मौका मिलते सर, हमारे जितने भी इश्यूज है, हमारे जितने भी पेंडिंग इश्यूज है आप लोगों के सामने रखे। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए फिर से एक बार इम्तियाज़ काशफ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें उम्मीद है सर कि आइंदा आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। There are difficulties that you all face while doing your daily reporting, and despite of those difficulties, despite of this fact, you have been ably taking the view of the government, taking the views of public to different platforms now. You have different kinds of media, new media being one. At the end of the day, you're doing a good job. You've been covering events very well. We do appreciate the kind of hard work that you've been doing. The Information Department of the Administration of Ladakh is grateful to all of you for having assisted us, supporting us in every event that we do and in every endeavor that we've done. Now, I'll tell you that yesterday we issued a notice for accreditation of fresh media persons with the government, with the UT administration. And the notice also says that the accreditation that was given in 2021 to all of you will be renewed, and then this is only a one-year engagement. So you can submit the application to the Directorate of Information here in Kargil, and we have a deadline of 20 days. So it's going to be hand-in-hand kind of relationship between the Department of Information and all of you, because we cannot do much without your support and your intervention and assistance. You as much as possible to formulate guidelines so that you also get government benefits like what happens in other states of the whole country. I don't know if the government of J&K has also come up with one yet. We could be the first ones to actually go ahead and formulate one and finalize it. Definitely. Thank you very much. I'll also say that responsible journalism it's a difficult thing to achieve these days. But then yes, all of you I keep reiterating, you are into responsible journalism. Do your best to take our views forward, to highlight and to highlight how the government is implementing various schemes, bringing water to the poor, poorest of the poor, bringing government facilities and programs to the remotest of villages of Kargil. And yes, your cooperation has always been there. And I'd also tell you that it's getting a little difficult now as well, because there are issues where people keep spreading news which is fake. Fake news is actually doing better than actually what we actually seriously tend to convey to people. The serious news is getting going to the backstage, and what is now going ahead is fake news. People just keep forwarding on WhatsApp what they just received from unknown people, and that's become a pastime, a hobby, unfortunately. We could share videos for entertainment, we could share jokes, but let's be serious. ख्यालात का इजहार करने के लिए तो इसके बाद आप सबके ज़हनशीन ये बात करना चाहूँगा कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके बाद 2 सेशंस होंगे। एक तो पैनल डिस्कशन सेशन होगा जिसमें हमारे पैनलिस्ट होंगे सैयद हाशिम रिजवी साहब, एडिटर हैं वॉइस ऑफ लद्दाख के, अनवर हुसैन साहब है, ये भी वॉइस ऑफ लद्दाख से को रिप्रेजेंट करते हैं, और मोहम्मद इसाक साहब हैं जो कि गुलिस्तान से हैं, और नासिरुद्दीन खफ़ी हैं जो कि एकेडमिशियन हैं और एक पोइट और राइटर भी हैं। तो हम इसके बाद पैनल डिस्कशन की तरफ सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार, अनवर साहब, आगा साहब, नासिर साहब और इसाक साहब। जैसे कि हम सब लोग अगर हम मीडिया की बात करें तो एक तवील हिस्ट्री हमें नजर नहीं आती है पर्टिकुलरली बात करें तो जितना भी मेजर डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 15 से 20 सालों में ही, जो भी हम पहले तो प्रिंट मीडिया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की
جس طرح سے ایک ایولیوشن دیکھتے ہیں، جس طرح سے پہلا یہاں پہ ایک رنگ الاخبار آ گیا، اور اس کے بعد پھر بہت سارے آرگنائزیشن جیسے کہ وائس آف لداخ کا ایک نیوز پیپر آیا، گریجولی پھر گریٹر لداخ نامی اخبار آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ پیرلل گروتھ دیکھتے ہیں کہ ایک براڈ کاسٹ میڈیا، جسے ہم یہ کیبل میڈیا کا جیسے کی شروعات سے کیبل میڈیا سے پھر ایک سوئچ ہوتا ہے کہ جو الیکٹرانک یا ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا. انور صاحب، آپ کا ایک ویریڈ ایکسپیرئنس رہا ہے، IMC کے پاس آؤٹ جامعہ ملیہ سے PhD کر رہے ہیں پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں. تو انگلش جرنلزم کو لے کے جو پرنٹ میڈیا میں جو کرنٹ ٹرینڈس ہیں جب سے آپ آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ جو آپ کے آبزرویشن رہے ہیں کرگل میں، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا کیا مشکلات ہیں جرنلسٹ کو پرٹیکولرلی انگلش میڈیا کی جو ریڈرشپ ہے یہاں پہ بڑھانے کے لیے، اور انڈیویجول جو چیلنجز ہیں ایز اے جرنلسٹ، اس کے مزید بھی اگر آپ کسی اور چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہیں کیونکہ آپ نیو میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. تھوڑا بریف رہے تو زیادہ اچھا رہے گا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ یہ اپارچونیٹی دیا ہے یہاں پہ، اور سارے انفارمیشن کے اسٹاف اور پریس کلب کے اسٹاف سب کا بہت بہت شکریہ. جب ہم کارگل میں میڈیا کی بات کرتے ہیں تو صرف کارگل کی ہی نہیں، جب ہم کارگل کی بات کرتے ہیں تو جو سچویشن ہے وہ لیہ میں بھی تقریباً سے یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں میڈیا کے لیے. میڈیا ابھی بولے تو بالکل تو ابھی اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم مشکلات کی بات کرتے ہیں لداخ میں میڈیا کی، تو ہم دوسرے مشکلات پہ بعد میں آ سکتے ہیں. پہلے تو سب سے بڑا چیلنج ہے سروائیول، کیونکہ ہمیں جب آپ نے پرنٹ میڈیا کا پوچھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کی یہی ایشو ہے. الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک ایڈیٹر چاہیے، ہمیں ایک رپورٹر چاہیے، ہمیں ایک اسکرپٹ رائٹر چاہیے، بہت سارے وہ اسٹاف چاہیے جو ہمیں گراؤنڈ پہ کام. سب سے پہلے تو نیشنل پریس ڈے کے موقع پہ تمام لداخ کے جتنے بھی میڈیا فریٹرنیٹی ہے انہیں میں دل کی عمیق گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ پریس کلب لداخ کے جتنے بھی میڈیا فریٹرنیٹی ہے. تو اس میں سب سے پہلے فیروز صاحب میں یہی جوائنٹ ڈائریکٹر کاش امتیاز صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ ایبریگیشن کے بعد لداخ فل فلیج یونین ٹیریٹری بننے کے بعد جتنے بھی پالیسیز، جتنے بھی اسکیم، جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں وہ لداخ یوٹی بننے کے بعد ہی ہوا. اس میں میں تہہ دل سے DIPR کرگل کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اسپیشلی سیکریٹری میم آمو، DPO کرگل، اور ساتھ ہی ساتھ امتیاز کاچو جوائنٹ ڈائریکٹر، کیونکہ ان کے آنے کے بعد کافی جیسے ہمارے بہت سارے ایشوز تھے میڈیا فریٹرنیٹی کی اگر ہم بات کریں، جس میں ایگریڈیشن کو لے کے، پینلمنٹ کو لے کے، ایڈورٹائزمنٹ کو لے کے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز، اور ہمارے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پریس کلب کے کچھ لینڈ بھی ہے انہیں بھی لے کے کافی دقتیں آ رہی تھی. اب مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں جوائنٹ ڈائریکٹر DIPR کرگل ان ایشوز کو پریارٹی بیسس پہ اعلیٰ حکام تک پہنچائے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہے میڈیا فریٹرنیٹی کے کرگل ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو جلد از جلد ازالہ ہو. تو حسین صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، کافی چیلنجز رہتے ہیں میڈیا پرسنس کے لیے، تو کس طرح کے چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں خاص طور پر؟ بالکل بہت ہی بہترین کویشچن کیا آپ نے، کیونکہ چیلنج پہ بھی میں نے تھوڑا بہت اپنے پریزنٹیشن میں نے رکھا تھا. جتنا چیلنج میڈیا میں کام کرنا، خطے لداخ میں ایز اے میڈیا کام کرنا بہت ہی چیلنج ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی بتاتے چلوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہمیں آتا تھا دور دراز علاقوں میں، اگر ہمیں کوئی شوٹنگ ہو یا کوئی پروگرام ہو، جیسے دراز ہو، پانی گھر ہو، چکتن ہو، تو ٹرانسپورٹ کو لے کے ہمیں بہت ساری دقتیں آ رہی تھی. تو اس پہ بھی جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب نے، اور مجھے امید بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے چیلنجز ابھی آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں بھی اگر جتنے بھی چیلنجز ہوں گے، ہمیں شیور ہے کہ آنے والے دنوں میں DIPR کرگل ان پہ فوکس. پریس کلب آف کرگل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس دن نیشنل پریس ڈے کے موقع پہ. آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ہمارا ایک بڑھیا انٹریکشن رہا، جیسے پہلے بھی رہتا تھا، آج اور بھی خوبصورت ہوا کیونکہ آپ کے نظریات ہم تک پہنچیں. آپ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اور اینڈ پبلک ریلیشنز کا جہاں تک تعلق ہے، ہم پبلک تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سیریس بزنس میں ہیں ابھی، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے جب سے UT ایڈمنسٹریشن یونین ٹیریٹری بنی ہے لداخ، تب سے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی پالیسیز ہیں اور جس طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں لداخ کے ہر حصے میں، ہر کونے میں، وہ پبلک تک
अच्छी तरह अनफिल्टर्ड सामने उन तक पहुंचाई जाए, उनको पता चले गवर्नमेंट कितनी सीरियस है उनके वेलफेयर के लिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो इरादे आगे बना के रखे हैं, जितने भी और पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आने वाले हैं और कितने गवर्नमेंट के कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं, वो भी उसके बारे में पब्लिक को भी पता चले, वो भी शिरकत करें हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 3 साल हो चुके हैं। फाउंडेशन डे भी 31 अक्टूबर को मनाया है। हर साल जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा और जितने भी अच्छे अच्छे काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं वो भी उनको भी पोर्ट्रे करना है, रिफ्लेक्ट करना है, अच्छी तरह डिस्प्ले करके लोगों तक बताना है, लोगों को भी बुलाना है इन फंक्शंस में, ताकि लोगों को पता चले हम किस लेवल पे थे और कहाँ तक कितने आगे बढ़ चुके हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का रोल रहेगा आगे और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम लोगों को पता चले, लोगों को बताएं कि गवर्नमेंट की कितने अच्छे अच्छे वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरह हो सकती है। और हम एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कि लोगों की कोई ग्रीवेंसेस, कुछ इश्यूज हों तो वो भी गवर्नमेंट तक आगे हम कन्वे कर सकें। More updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.